So hey guys, what's up? Welcome back होइन. So everyone knows that होइन, अब अहिलेको अब मान्छेहरू कस्तो भइरहेको छन् होइन. सो कस्तो मोबाइलबाट कस्तो कस्तो चिज हेरिरहेका छन् होइन. अनि मोबाइलबाट अब दुनियाँ देखिन्छ, दुनियाँ चिजहरू हेरिरहेका छन्. मान्छेले चाहिने नचाहिने चिज धेरै हेरिरहेका छन्, चाहिने भन्दा पनि होइन. आफूलाई अब त्यो क्रिएटिभिटीतिर लानु भन्दाखेरि पनि अब त्यो आफू वेस्ट भइरहेको छ कि तिनीहरूको टाइम जति पुरै वेस्टेज भइरहेको छ होइन. सो त्यसको लागि चाहिँ होइन एउटा भिडियो लिएर आएको छु होइन. यो भिडियो चाहिँ चेतन भगतको हो होइन. यु अल नो द्याट होइन, आई थिङ्क होइन, चेतन भगत. अब उहाँले चाहिँ अब पनको बारेमा भन्नुभएको छ होइन. सो यो कस्तो चिज हो क्या, यसले कस्तो चाहिँ असर गर्न सक्छ क्या मान्छेको होइन माइन्डमा होइन. अब अहिलेको एडल्टहरू होइन पुरै अब धेरै नै इन्भल्भ हुन्छ क्या उनीहरू होइन. सो यसलाई चाहिँ हटाउनु पऱ्यो क्या. यो चाहिँ नराम्रो चिज हो होइन, नकारात्मक चिज हो. यसले ब्रेनमा कस्तो ह्याम्पर गर्छ होइन. सो वी गन नो अबाउट द्याट होइन. सो लेट्स वाच दिस भिडियो गाइज. सम हेल्पफुल कन्टेन्ट फर यु अल गाइज. यु निड टू नो द्याट. जी हाँ, आज हम पॉन की बातें करेंगे. नॉट समथिंग आई टॉक अबाउट हेयर एवरी डे, लेकिन शायद ज़रूरी है बिकॉज कनेक्शन इज़ देयर टू मोटिवेशन, कनेक्शन इज़ देयर टू करियर. तो एंड लड़कों को स्पेशली, लड़कियों को भी लेकिन लड़कों को स्पेशली बहुत अफेक्ट करता है कई बार. तो इसके बारे में बात. सो गाइज इज इंडियन, यू ऑल नो दैट होइन. सो लैंग्वेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है होइन. में बात करनी ज़रूरी है. कई बार आप लोगों ने कमेंट्स में भी कहा है, तो आई विल गिव यू माई थॉट्स ऑन इट. कोशिश करूँ सबै थिङ चाहिँ अब इङ्ग्लिसमै जान्छ जस्तो लागेको छ होइन. इङ्ग्लिसमा भयो चाहिँ कम्युनिकेट गर्न के अरे अब लिसन गर्न सजिलो हुन्छ होइन. अब हिन्दीमा छ भने चाहिँ हल्का फुल्का गाह्रो हुन सक्ला होइन. सो एनीवे गाइज वाच इट. करूँगा आपको समझाने की इसके साथ कैसे हैंडल करना है, बिकॉज इट्स समथिंग you need to be very careful about is the porn usage in your life, right? It applies to men more but also to women. So yeah, क्योंकि porn आज freely available है और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी HD and with the most beautiful actors in it. And yeah, they are actors by the way. So yeah, they are acting and it's designed to arouse you, and it gets better and more everywhere, right? And एक बार इतनी सारी, पहली बात तो पॉन है और उसमें एक सिलेक्शन मैकेनिज्म भी है बिकॉज आप यू कैन इजीली डू मोस्ट व्यूड और टॉप रेटेड और व्हाटएवर थिंग्स लाइक दैट विच कैन हेल्प यू get to the best of the best porn, right? The maximum arousal porn you can see. So you feel okay, this is great. Well, it's great for the industry, it's great for the porn industry. Actually it's not doing that well, by the way. Porn industry is also not making that much money these days because it's so much porn available free that money wise it's not great. But yeah, distribution wise porn is everywhere, and yeah, it's great for the views and all, but they are not making money there. Anyway, that's a separate issue. But it's not great for you. It's not great for you that you get the millions of videos and you get to see the top 10 of those million videos to arouse yourself. That's not good because it is messing up with the your mind and body system of arousal that naturally has been designed to make you a normal human being. तो वो उसके साथ interference हो रहा है. Porn is therefore bad for you. Not morally. I'm not talking from a moral point of view or religious point of view. I am not that guy. मैं कोई उस टाइप का नहीं हूँ. आई डोंट थिंक मॉरली कोई इतना इशू है. बट साइंटिफिकली आया है कि टू मच पॉर्न कंजम्पशन इज़ बैड फॉर यू मेंटली एंड बैड फॉर यू फिजिकली. एंड देयर आर टन्स ऑफ आर्टिकल्स एंड वीडियोज़ ऑन दिस. एंड मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ जो इस बारे में एक्सपर्ट की तरह बोलूँ. तो आई वुड इनकरेज कि आप खुद ही वीडियोस देख लो, यूट्यूब में ही देख लो कि वाई एग्जैक्टली इट्स बैड फॉर यू साइंटिफिकली, नॉट जस्ट ओपिनियन कि हाँ भाई, and not some religious guy telling you. Like you'll see scientific studies, there are TED talks on it which is wonderful. So I would encourage you to see them if you want to know why. But roughly like, or in a very gist, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है. If you watch porn too much, you know, you need the same quality videos in your real life, and real sex life में वो नहीं होता है ना. Real people have real bodies and they don't look that good and there is not so much variety. So obviously you will be disappointed, you know. And let's assuming you do get real people,
that itself is a big assumption, because a lot of men just get lost in porn so much that they just get out of the real world, and they are just like, यार कौन लड़कियों से बात करेगा, या who will make a girlfriend. I could get rejected, but if you go to a porn site, it will never reject you. It will say ये नहीं, ये भी देखो, ये भी देखो, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, आपको कौन से बाल चाहिए, कौन सा रंग चाहिए, सब मिलेगा आपको. So you feel like यही better है यार. But you know, it's not, because porn, yeah, it never rejects you, but you never learn how to talk to the opposite gender. So that's not good. And your body, your actual body, your physical body will get desensitized to porn over time, right? So you need what video you found very exciting today, you will not find exciting 3 months later, right? You will need something more exciting, right? And then one day nothing will be exciting to you, and then your body will stop responding only to porn. ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ. एंड देन तब क्या देखोगे तुम लोग? हाँ, तब आस्था चैनल देखना है, राइट? तो so your body will just refuse to function, or it will refuse to function in real life. So that's not good. And what the porn is happening is, like, when you do porn and you are getting dopamine hits in your brain, and it becomes addictive, and it messes up with the reward system, like I said, in your brain. 5-10 किलोमीटर की भागने के बाद जो आपके माइंड में डोपामीन आना था, वो एक पॉर्न सेशन में आ गया है. तो उसके बाद आप क्यों भागोगे? आप बोलोगे यार पॉर्न ही देख लेते हैं, कौन भागेगा? सो यू हैव मेस्ड अप योर ब्रेन, राइट? एंड करते जाओगे, देन यू रन फॉर अ ईयर, और यू वॉच पॉर्न फॉर अ ईयर. टेक 2 people, 1 साल बाद वो भागने वाला कहाँ पहुँचेगा और पॉर्न वाला कहाँ पहुँचेगा? यू कैन गिव द आंसर कि उसका क्या होगा. नाउ आई नो इट्स एक्सट्रीमली टेम्पटिंग टू वॉच इट. आई मीन, आई नो एज अ गाय, especially I remember my teenager, we were super curious about it in IIT also. I mean, people would do all kinds of crazy things, but we were automatically limited because it was not everywhere. It was like in magazines, and you would borrow and see a little bit or something like that. But you have it everywhere. Now you're young. I'm not saying कि जाके साधु बन जाओ. I you know, I don't talk like that, and even I don't write like that. But go learn how to talk to girls, or go learn how they think and how you think, and how you can be respectful and still have a relationship and things like that. Go build your body, look attractive. You want to look physically attractive. Why are you watching attractive people? Make yourself attractive, right? Express your urges. You have them, they are natural, but express them the real way, the proper way, not like this, right? So porn has been known to destroy lives, and it's in your pocket now, in your phone all the time. So the only way to keep away from it is you deciding. Now, occasional may be okay. I mean, it's not known ki occasionally people have seen and it has destroyed them. So I will only go by scientific evidence. So occasional use has not been shown to be very, very harmful, but occasional use can quickly become frequent use to addictive use, and that is extraordinarily harmful. So I leave it to you to decide what is occasional and can you handle occasional. But हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको खुद ही कंट्रोल करनी है, कोई और आपको आके नहीं करके देगा. So, why waste your life on something like this? So guys, why I choose this video, because every individual, in these teenagers, गर्छ क्या यस्तो कुराहरू, त्यो लिटरली गाइज, त्यो अब के भन्नु पर्दाखेरि, यो लाइफ यो स्टेज छ नि, हो यो स्टेज, टिनेजर्सको स्टेजहरूमा चाहिँ मान्छे उत्सुक हुन्छ क्या, अब यस्तो चिज हेर्न, यस्तो चिज गर्न, होइन. सो यो चाहिँ एकदमै हार्मफुल नै हो क्या सबैको लागि क्या. रियल लाइफमा जे हुन्छ, होइन, त्यो अब भर्चुअल वर्ल्डमा फरक हुन्छ, रियल वर्ल्डमा चाहिँ त्यो फरक हुन्छ क्या चिजहरू, होइन. सो होइन, वाट यु इमेजिन, होइन, द्याट विल वर्क इन रियल लाइफ क्या. अब केही भिडियो हेऱ्यो भने तिमीले, अब कसैको बारेमा, कसैको लाइफसँग रिलेटेड भिडियो हो भने, अब तिमी आफै त्यसमा सोच्न गइरहन्छौ क्या. सो होइन, तिमीले, होइन, अगाडि अब केही देख्यो भने, अब त्यो एउटा मान्छे देख्यो भने, त्यो मान्छेको लागि, मान्छेको धारणा, त्यो मान्छेको हेराइ पनि तिमीले त्यस्तै सोच, नेगेटिभ सोचै गर्छौ क्या. सो होइन, स्टप अल दिस, होइन. पोर्न्स आर नट फर अस, होइन. You need to stop this, and you need to move on. You need to move on to your career, and you need to make your career, and you need to be your best. So, guys, I request you all to be safe and be best, So see you in the next video, guys. Hope you like it. So, Jai Bholnath.